Now, ladies and gentlemen, Republic is immensely happy to announce that we have received hundreds of phenomenal responses on our Positive Influencers program. And today, we will take you around what Republic has to offer you. It will be our platform and your content, viewers, right here. Today, we will take you on a spin around the campus, viewers. Alright, so multiple vantage points, viewers, on our campus. We're going to take you on a spin around the campus and show you the kind of samples that we are receiving. To start with, we have our teams around the campus from studio and the campus and the edit bay. Shweta, my colleague, is right now joining us from the Hindi studio. We'll take it away. बिल्कुल रक्षिता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं इस वक्त आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का ये हिंदी स्टूडियो आप देख रहे हैं और इस स्टूडियो को देखते ही आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहिए तो देखिए, एक अगर जिन लोगों ने शायद स्टूडियो नहीं देखा होगा उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हमारे स्टूडियो में बहुत अलग अलग वॉल्स होती है जिसके लिए हम मल्टीपल फ्रेम्स बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर अपनी किसी इमेज को डाल करके कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पिलर वॉल है जहां पर आप स्टैंडिंग कर सकते हैं, सोफे के साथ कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए, ये बिग वॉल है। कई बार आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे जब ओपनिंग यहां से होती है तो ये यूज किया जा सकता है। इस वॉल को हम 2 चेयर्स के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं खास मेहमान के साथ तो वो भी यहां से हो सकता है। इसके अलावा जरा एक और अच्छी सी वॉल आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो वॉल है, इस वॉल को आप यूज कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स को दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसके साथ एक और वॉल आपको मैं दिखाती हूं। ये देखिए, और जिस फ्रेम में आप मुझे देख रहे हैं ये जिफ फ्रेम कहलाता है। इस पे भी आप मूवमेंट करते हुए अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक्सप्लेनर के तौर पर तो वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का जो हिंदी स्टूडियो है ये वर्ल्ड क्लास स्टूडियो है जिसमें बहुत सारे हमारे 6 वॉल्स हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो न्यूज स्टूडियो है वो अपने आप में ही एक अलग तरीके से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देता है। तो यही मकसद है। इस वक्त मैंने आपको हिंदी स्टूडियो दिखाया, लेकिन स्टूडियो के अलावा आप अगर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में शूट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? Well, that was our studio, viewers. Wait till you see Republic's campus. I'm standing on these sprawling grounds of Asia's largest newsroom. Spread over an area of over 6 acres, this stunning campus is for you to shoot your video. Plus, cherry on top, we have our expert team of digital editors who are here to edit your content for you. Let me go across to Tanvi, who is right now in the state-of-the-art digital bay. Tanvi, take over. Thanks, Andra. We're here in the digital newsroom right now, and I have my colleagues Himanshu and Pranav joining me. Today we thought, yesterday was about Monday motivation. Today we thought was power packed in terms of taking action. So instead of talking about the videos, Himanshu, that we've been getting in, I thought let's show our viewers some videos. So over the next couple of minutes, we'll show you a sliver of what is coming in terms of sample videos. It'll give you a little bit of an idea as to what is the kind of content that people are sending in. What is on the lines of absolutely. And I think that one which really stuck with me, Himanshu, is the one of a 22-year-old boy, Nishant, whose video we'll just play out. But Nishant sent this beautiful video of what I thought was very like quiet positivity of the everyday, nothing fancy. The story of a leather sandal maker. We're going to play that out, and I think the big headline here is that you don't need a big bang idea or any fancy equipment to record. We're looking at everyday stories for the Positive Influencer program on to Nishant's video from Vizag. మా టీచర్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు బెస్ట్ శాండిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మేడ్ విత్ హ్యాండ్ అని. అలాంటి ఒక స్టోరీ, ద స్టోరీ ఆఫ్ లెదర్ శాండిల్ మేకర్. ఇంట్లో 89 నుంచి ఉన్నాను. అప్పుడు నాకు 8 years ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి వల్ల స్కూల్ మానేసి ఇదే వృత్తిలో ఉండిపోయాం మేము. కస్టమైజేషన్ అంటే ఎప్పుడు కలర్ ఆర్ డిజైనే కాదు, అసలైన కస్టమైజేషన్ అంటే ఇది. రెడీమేడ్ అంటే మిషన్ మేడ్ అండి, అది హ్యాండ్ మేడ్ మీద చేస్తాం కనుక ఓన్లీ లెదర్. ఇప్పుడు రెడీమేడ్ లో లెదర్ తక్కువ, కింద బాటమ్ కూడా లెదర్ ఇస్తాం. లెదర్ షూ ఒకటి తయారు చేయాలంటే 1 రోజున్నర పడుతుంది. చెప్పులు అయితే 1 పూట పడుతుంది.
పోలియో వాళ్ళు కాళ్ళు అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయించుకుంటే మీకు దేవుడు మంచిగా చూస్తాడు, మాకు ఇలా సేవ చేస్తున్నారు, మీరు మీలాంటి వాళ్ళు ఉండాలని కొంచెం వాళ్ళు మాకు పొగిడేవారు అనమాట. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, కష్టం అన్నీ అందులో ఉంటాయి. ఉన్నంతలోనే తృప్తి పొందడానికి మేము పని చేసుకుంటాం అంతే. Wow, that was amazing. Himanshu, you've been looking at some of the content and an interesting one caught your eye. And we have got a beautiful video from Jalore, and it's Vishal Khandelwal who has sent us this story about how Alauddin Khilji's daughter actually wanted to marry Viramdev, the Chauhan king. And since Viramdev refused to marry Alauddin Khilji's daughter, so Khilji came, conquered that city, and then he beheaded the king. So it's a beautiful story, but still he did not get what he actually wanted. So it's such stories, Tanvi, that we actually are like in busy newsroom, we don't get it daily. And now that we have opened it up to all our positive influencers, I think this is a beautiful time to tell the world like stories that India is made of. Absolutely. Stories of India, stories of history, significance. Absolutely. Yeah, let's play that video out. जालोर का वीरमदेव चौहान एक ऐसा राजकुमार जिसके खूबसूरती और मल युद्ध के चर्चे होते दिल्ली बार बार। कहते हैं फिरोजा का दिल वीरमदेव पर आया था, खिलजी की बेटी को बड़ा मन भाया था, और वो बोली जालोर कुमार पर मैं बलिहारी, वर वरु वीरमदेव वरना रहूं अखंड कुंवारी। ये सुन अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन वीरमदेव के उत्तर ने राजपूती आन बान शान को बढ़ाया। कहे वीरमदेव मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे फान। मतलब कि अगर मैं इस तुर्कणी से शादी करता हूं तो मेरे मामा का कुल भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित होंगे, और ये तभी हो सकता है जब सूर्य पश्चिम से उगेगा। ये सुन अलाउद्दीन खिलजी गुस्साया और अपनी बड़ी सेना जालोर को नष्ट करने भेज दी, और कहता है अपने सैनिकों से कि जाओ वीरो, वीरमदेव का सर काट कर ले आना। 1.5 साल तक युद्ध चला। वीरमदेव और कानरदेव चौहान बड़ी वीरता के साथ लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जब वीरमदेव का कटा हुआ सर फिरोजा के सामने ले जाया गया, तब एक कवि अतिशोक्ति के साथ कहता है कि फिरोजा ने अपनी नजरें उठाई वीरमदेव के सर को देखने के लिए, और तब वह वीरमदेव का कटा हुआ सर घूम गया। इससे बड़ी महान गाथा कहां देखने को मिलेगी। अब बारी है हम जालोर वासियों की कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीरमदेव की बहादुरी की इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं। And not just about history, we also have videos coming in from finance and how you should invest. And not to talk more about that, I think Pranav, you were shifting through lot of those videos. You want to tell us or share some video from your side? So, I've just been going through so many of these videos over the past 3-4 days, and what I realize is that there is immense amount of talent that we have. There are domain experts out there, but what they probably lack is the skill set to put out their thoughts on a platform, and secondly, probably the reach. So, one of the examples for instance, is a video I have received, which I really like, is from a CA. He's an expert, he understands tax well, but the video that he has sent us is about, explaining the new tax regime, or for example, simplifying tax regime for common ordinary Indians, and which came into existence right from April 1. So, these are very timely and nice explainer videos that we are also getting from different sections. I mean, we can probably you want play to that out. play Yes, that video as well. We should play that out. Yeah. But before we play that out, I know we're going to hit Arnab's show really soon. But before we hit that show, we will leave you with this one video and encourage you to apply. To apply, you go to www.republicpositiveinfluencer.in. Hit that apply button. No matter the genre, I think the big headline here is that, whether it's history, it's culture, or just the everyday story of positivity that you think you can tell, even if it's not part of your full-time job, fire in that video to us. We're looking forward to it. We're hearing you, and we'll help open up our platform so that you can scale your positivity to a larger audience. Here's that video Pranav was talking about, and then we hit the debate. इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है, लेकिन हम कभी कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ऐसी कुछ छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके चलते हमें इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सारी रिटर्न एकदम सही तरीके से भी फाइल कर दें
उसके बाद लेकिन आप उसको अगर वेरीफाई नहीं करते तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आपकी रिटर्न ही अमान्य डिक्लेयर कर दी जाती है, माना जाता है कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी। हम नहीं चाहते कि ऐसी छोटी बेसिक मिस्टेक्स के चलते आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए। ITR फॉर्म अगर आप गलत फाइल कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है, वापस आपको भरनी पड़ती है कुछ एक सिलेक्टेड दिनों में। अगर आप नहीं भरते तो उसके बाद और पेनल्टीज और फाइन्स और बहुत सारी लिटिगेशन हो जाती है। तो अपनी जो रिटर्न है वो बहुत ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कीजिएगा कि आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल है, कौन सी रिटर्न आपके लिए लगती है और इनकम टैक्स पेयर्स क्या क्या गलतियां करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त जिससे उनको नोटिस आता है। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स की जो नोटिस है वो कम आए। ये किसी भी तरह की टैक्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।